Good evening, everyone. Warm welcome to Regulatory Bodies YouTube channel by Testbook. My name is Madhav Sir. I welcome you all in the next session and a very important session, which we call it as Finance Current Affairs. So today we will be covering the Finance Current Affairs for 20th to 22nd of September, and I'm pretty sure this is going to help you a lot in your upcoming examination. I have realized from past few sessions that you are more into the revision sessions. आप revision sessions को तो attend कर रहे हैं, but you are not following the regular sessions. Trust me guys, September month is really very important. अगर आपने इस month को lose छोड़ा तो it's going to be really very tough for you to score as per your target. अब आपका target अगर 50% है out of 80 या फिर 60% है out of 80, whatsoever your target is, it is impossible to achieve that target if you are not completing your September month on regular basis, because it will be really very tough guys. Trust me, बाद में revise करना काफी ज़्यादा tough हो जाएगा. So don't do it on your part. Don't unintentionally अपने लिए काम मत बढ़ाओ. तो try to watch these sessions on regular basis. And as you know, since the RBI notification is out, I'm trying my level best कि मैं अपने sessions को ज़्यादा lengthy ना करूँ, so that I can take your minimum time to give you the maximum content in a similar manner with a similar target. I have been live today itself. ठीक है जी? So I hope you are good. I hope we are good to go. No more doubts, no more discussions. Shall we begin the discussion? आज जल्दी में I forgot to share the link of this session with you all on my Telegram as well as Facebook. So let's quickly share the link. You also copy the link with me. Let's collectively copy the link and share it with our friends so that more and more students, they are aware that yes, the session is live and they should attend this session in order to score pretty good marks in their upcoming examination. ठीक है जी, जल्दी से सेशन के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा. Now let's get started with the first news of the day. But before I start, if you want to download the PDF of this session or maybe my revision session PDFs, they all are available on the Telegram channel. My handle is @Madhav, and you can even scan this QR code in order to join my Telegram channel. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गई? I guess we are good to go. Here we go with the first news of the evening. The first news is related to Bima Sugam India Federation website. So what is this Bima Sugam India Federation website? Why it has been launched? By which organization this website has been launched, and what will be the impact or benefit of this particular organization? All these points we will be discussing in this particular session itself. ठीक है जी? So I'll start my discussion with the first point. The first point says, recently the Insurance Regulatory Authority, that means the Insurance Regulatory and Development Authority of India, which is responsible for the regulation of insurance sector in a similar manner the way RBI is responsible for the regulation of banking sector, IRDAI is responsible for the regulation of insurance sector, has launched Bima Sugam India Federation website. So this particular website was launched by the newly appointed chairperson of IRDAI. And what is the name of the newly appointed chairperson of IRDAI? So the name is Ajay Seth. Remember that. What is the significance? So the significance is it marks a key step in building India's digital public infrastructure for insurance sector. So in order to build public infrastructure for insurance sector, this particular website has been launched. Now you must be wondering कि क्या है ये website, क्या फायदा होगा इसका, क्या impact होगा? All these things must be disturbing you right now. So let's try to find out the answers. So this particular website is going to provide you a one-stop digital platform solution for all the insurance needs. So आपको जो भी insurance related जो भी requirements है, जो भी needs है, this website is going to be the one-stop solution to ensure convenience, transparency as well as inclusivity in the insurance sector. So ये जो initiative है, this has been taken in order to make the insurance sector related information convenient, transparent, as well as include all the information at one single point. This particular initiative is taken, and this initiative will undoubtedly support government's vision of achieving insurance for all by 2047 under the Viksit Bharat 2047 mission. So remember this, Government of India, or I would say the Indian government is targeting to provide insurance for all by 2047
when India will become a developed nation under the Viksit Bharat 2047 mission. अब इसके कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स को आप थोड़ा डिटेल में देखते हैं. पहला फीचर है वन स्टॉप सॉल्यूशन, वन स्टॉप portal. What I'm trying to say, if you are inquiring about life insurance, or you want to buy health insurance, or you want to compare motor insurance, or you want to manage your general insurance, then all these facilities are provided on the single platform. That means you can buy, you can compare, as well as you can manage policies in one place. You can manage policies in one place. So it is a one-stop solution, one-stop portal. अब आपने शायद सुना होगा policybazaar.com है ना. policybazaar.com क्या है सर? वो एक ऐसा ही तो प्लेटफॉर्म है which allows you to inquire about different insurance policies at a single platform, and you can even compare the different insurance policies. और वहां पर बहुत सारे insurance services they are registered which are providing you with the direct service. अभी ऐसा लग रहा है पहले पॉइंट को पढ़ने के बाद शायद पॉलिसी बाजार का फ्यूचर खतरे में है, बिकॉज दिस हैज बीन नाउ इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली. लेट्स ट्राई टू लर्न मोर अबाउट इट. सेकंड इज द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एंड कस्टमर सपोर्ट. सो इट विल मेंटेन, वेरी इंपॉर्टेंट, it is going to maintain a centralized insurance database, provides assistance in resolving insurance related queries. तो यहाँ पर अब जितनी भी insurance related queries है उसके लिए एक centralized database बनाया जाएगा और वहीं से सारी insurance related queries को resolve किया जाएगा. It will help the policy holders understand the policy complexities. This is the second term. This is again one of the important operation performed by Policy Bazaar. I'm just taking an example for reference. Third is convenience for policy holders. So it will streamline the process to compare premiums, features, coverage. Policy management facilities will also be provided through this particular system itself. Management means if you want to add the name of the nominee, if you want to change the name of the nominee, all these kind of facilities, all these kind of services will be provided on the same platform. Then we have the phased implementation. So initial phase is September 2025, where information and guidance will be provided, and full transactions will be provided from December 2025. Once insurers and ecosystem partners, they completely integrate themselves on this particular website, then you can even purchase. लेकिन September 2025 से अभी it will play an important role as of providing the information related to the insurance services, provide you the guidance related to the insurance services. But जो practical operation है buying, comparing या buying का managing का, अगर मैं basic कहूँ buying and managing का, that will be provided after December when all the companies they will integrate themselves with this particular portal itself. ठीक है जी. What will be the impact? अब इससे क्या होगा? So policy holder will be empowered, informed decision making लेने का कैपेसिटी होगी आपके पॉलिसी होल्डर की. सेकेंड इज डीपर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन. जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उतना ज्यादा पेनिट्रेशन इंश्योरेंस का. ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस अक्रॉस द इंश्योरेंस वैल्यू चेन्स, एंड इट विल सपोर्ट द नेशन गोल टू अचीव इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047. अब क्या है सर ये बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन? बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन इज सपोर्टेड बाय लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल as well as general insurance council. What is the role? Sir, it will provide a marketplace for insurance products, guidance hubs for the consumers, database manager for insurers, as well as policy holders. We all know that IRDA is the regulator of the insurance market, and this regulator has recently launched Bima Sugam India Federation website. Clear हो गई बात? Crystal clear है. एक point जो यहाँ पे mention है, I hope it is clear to you. Moving on to a question on the same. Question क्या कहता है? So Bima Sugam India Federation website has been launched in September 2025 by the Finance Minister of India. No sir, it was not launched by Finance Minister of India. Rather, it was launched by IRDAI chairperson. Remember that. Second point is, sir, it is supported by Life Insurance Council and General Insurance Council. That is true. The platform act both as one-stop portal and centralized insurance database. True. उसके बाद अगर हम बात करें, the full-scale transaction will happen in December 2025. That is true. The initiative will support the national goal of insurance for all 2047,
in order to achieve the Viksit Bharat 2047 criteria. So in that particular case, my answer would be 2, 3, 4, 5 are correct. So B option is going to be the correct answer. ठीक है जी, क्रिस्टल क्लियर हो गया, कतरा कतरा समझ आ गया? अगर एक एक पॉइंट क्लियर है, समझ आ गया हो, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में यस सर लिखिएगा, so that I can move ahead. If it is clear, just give me yes sir, so that we can move on to the next news without any further delay. ठीक है जी, अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं. अगली न्यूज पहले मैं नहीं पढ़ाता था, आपको भी पता, बट दिस टाइम द नेक्स्ट न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट. That is related to the GDP growth estimates of India. So we all know that recently we have started, according to RBI, India is going to grow, or India's GDP growth rate is expected as 6.5%, but surprisingly, Fitch is estimating that India's GDP will grow by 6.9%. I hope you remember. And as per most of the organization, like IMF, it is expected that India's GDP will be growing by a 6.5% rate. I hope you remember that as well. As per World Bank, any idea guys? According to World Bank, India's GDP is going to grow at what percent? What will be your answer? What will be your answer guys? World Bank. बताओ 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 जल्दी से. Is it 6.5? अच्छा, अगर ये 1.6.4 है तो फिर व्हाट अबाउट IMF? सिक्स 6.3, 6.4. चलिए मैं बताता हूं. अगर हम IMF की बात करें, so according to the latest announcement which is done by IMF has announced that Indian GDP will grow by 6.4%, and earlier forecast was 6.2, जिसे IMF ने recently क्या किया, improve किया as per the result of the first quarter, as per the result of the first quarter of India's GDP. But according to World Bank, if I talk about the World Bank, as per World Bank, India's GDP is going to grow at what rate? So according to World Bank, India's GDP is expected to grow by 6.3% as per the latest data which has been given by World Bank as well. ठीक है जी, तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने, they are important. Now coming back to the other important, you can say, the credit rating agency of the world. So we have Fitch, we have Moody's, and then we have S&P. So S&P is also one of the top credit rating agencies of the world. So according to this particular credit rating agency, it is expected that Indian economy is going to grow, or Indian economy is expected to have the GDP growth rate of what percent? So that is 6.5%. So remember that S&P is on the same lines as that of RBI, where they are estimating that Indian GDP is going to grow at the same rate, that is 6.5%. तो ये याद रखिएगा. So Standard and Poor September 2025 subject is India's real GDP growth forecast for 2025-26. It is estimated that Indian GDP will grow at a rate of 6.5%. It is going to be growing at a rate of 6.5%. अब यहाँ पर थोड़ा important aspect जो आ जाता है, which will help you while writing a descriptive question, as well as it will help you in the interview. First question would be, according to S&P, or it can be in general, why we are expecting that Indian GDP is going to grow at a rate of more than 6%. What are the supporting factors? So the supporting factors are normal monsoon. Normal monsoon will lead to boost in agriculture output and rural consumption. Second is easing crude oil prices, lower energy import burden, reduce inflation pressure on the country. Income tax concession, tax reliefs in terms of direct tax as well as indirect tax, increasing disposable income, which will undoubtedly increase your consumption. The best example is GST. So GST, which has been reduced by the government, it has resulted in increase in lakhs of crores in the pocket of the buyers, which will undoubtedly increase their demand. Demand will result in increase in production, and that will result in increase in GDP of the country. The next factor is monetary policy.
easing by Reserve Bank of India, anticipated or likely lower interest rate to help investment and consumption। हम जानते हैं कि आरबीआई ने जो ये मॉनेटरी पॉलिसी को ईज की है, सीआरआर का पहला ट्रेंच has been witnessed in September, and now the current CRR is 3.75%. In October it will be 3.50. So this policy or monetary policy ease out will undoubtedly make the borrowing easy and cheaper, which will result in increase in investment and consumption. Strong domestic demand, consumption and investment, less reliance on exports. So India में जो best part है, we have a strong domestic demand, strong consumption, we have strong investment. So in that particular context, our dependency on exports is pretty low, and as per the current scenario, due to the tariff war or due to the tariff issues which are prevailing and geopolitical situations of the world, the most affected segment is most impacted segment for every country is their import-export business. But in case of India, we are not relying on export. तो ऐसा तो है नहीं कि अगर export कम हो जाएगी तो इंडिया को बहुत बड़ा impact होगा, ऐसा नहीं होगा. That is the reason we are still expecting to grow at a decent rate, and that is the reason S&P is estimating that Indian economy will grow at a rate of 6.5%. Now, अगर आपके पास कुछ supporting factors हैं, then there are certain risks, certain challenges which may impact your GDP growth estimates. The first one is geopolitical tension as well as trade policy uncertainty. Oil price volatility remains a risk. If oil price rise, inflation will increase. It will hurt the business margins. Inflation is easing, especially food inflation, but maintaining this trend is critical, because if I talk about the current scenario, the flood-like situation, the excessive rainfall in northern India, this will impact the agriculture produce of the nation, and this impact on the agriculture produce will undoubtedly impact your food inflations as well. Then private capital expenditure growth is expected to remain moderate in the near term. So private capital expenditure is good, but the growth of this expenditure is still moderate. On the other side, अगर ये ज़्यादा होती growth, capital expenditure by the private investors अगर increase होता, then the case would have been somewhat different. So these are certain risk factors, these are certain supporting factors which you need to remember. Direct question पूछा जा सकता है आपके MCQ format में for supporting and risk factor related to the GDP growth estimates of the country. So what are the key observations? According to S&P, India is seen to remain fast-growing major economy. Growth is expected largely due to domestic demand, and inflation pressures are easing, which RBI gives room to ease monetary policy and support growth. तो आपकी जो inflation rates है, they are easing out, और अगर ये ease out हो रहे हैं तो भैया RBI को कोई tough steps लेने की जरूरत नहीं है, which will undoubtedly support the growth of the economy, which will undoubtedly push the economy growth. अगर RBI tough step लेता, CRR कम करने की बजाय बढ़ाता, रेपो रेट कम करने की बजाय बढ़ाता, तो ऑब्वियसली इंपैक्ट आता. आरबीआई अगर सीआरआर रेपो रेट को आगे आने वाले टाइम में चेंज नहीं भी करेगा, स्टिल इट इज सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी विदाउट इंपैक्टिंग द इन्फ्लेशन. ऐसा तो है नहीं कि आज की डेट में इंडियाज इन्फ्लेशन इज क्रॉस्ड 6%. नो, we are still around 2%, and if we are around 2% and repo rates are all time low, CRR is all time low, and over the period of time this inflation will increase, we accept that, but it will go near the acceptable and most I would say most reliable or most acceptable rate, which is good. अगर ये अभी 4% पे होता तो वहां से 6 पे जाता, that would have been tough. So India is in a good situation to support growth because of the inflation, which is already easing out and reducing the pressure on the RBI to come up with strong or tough monetary policies. Clear guys? समझ आया ये concept? This concept is really very important. जो मैंने अभी बातें कही, अगर किसी को ये बातें अभी भी समझ नहीं आई तो पूछ लो. I can give this answer again. What I'm trying to say is, I'm trying to say that in India, inflation rates were decreasing, है ना? Inflation rates were decreasing, तो उनको देखते हुए RBI first decreased the repo rate, then RBI decreased the CRR, cash reserve ratio. Even after decreasing the repo rate, पहला repo rate cut February में हुआ था, CRR has been cut
in December, then it has been again announced in the month of August. First tranche has been implemented. Still, our inflation rate is around 2%. If the nation inflation rate is around 2%, these factors, they will result in push, or they will result in push in the inflation rates. And even if they are pushing the inflation rate, they may go, or the inflation rates may land up around 4%, which is acceptable, which is favorable. But this push of 2 to 4% inflation rate will be accompanied by growth. Why it will be accompanied by growth? I hope कभी ना कभी आपने मेरे मुंह से ये एक स्टोरी जरूर सुनी होगी. वो स्टोरी क्या कहती है, ध्यान से सुनना. Whenever money supply in the market increases, it results in increase in demand, but supply cannot increase simultaneously, so it results in increase in inflation. तो जब भी कभी inflation आता है, it leads to the increase in pressure on the production houses. So production houses will increase their production, and this increase in production will lead to increase in GDP. So if inflation is within the control range, it supports the GDP growth, or it leads to GDP growth. So अगर आपका inflation बढ़ रहा है, इससे आपकी GDP बढ़ने के पूरे चांसेस हैं. अगर मान लो यही इन्फ्लेशन 6-7% होता, या 4 भी होता, और कल को 6-7 होने की टेंशन होती, तो उस केस में RBI इतना ओपनली प्ले नहीं कर पाता. बट नाउ RBI कैन प्ले प्रीटी ओपनली इन ऑर्डर टू मैनेज दीज रेट्स. मजा आया? अरे बोल यार, मजा आया? हर जगह हर बार ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, कोई बताता भी नहीं है. ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, तभी जाकर RBI के ऑपरेशंस को समझ पाओगे. तभी जब RBI में जाके काम करोगे, चीजों का समझ आएगी, मजा आएगा. वरना फिर रटना तो पड़ेगा. आज भी रट रहे हो, कल भी रट लेना, लेकिन रटने से जिंदगी चलेगी नहीं, याद रखना. ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें? अगला क्वेश्चन कहता है S&P प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ एट 6.5% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26. दैट इज ट्रू. Growth rate for the financial year 2024-25 was estimated at 6.5% as well. Was estimated at 6.5% as well. Give me the answer. क्या ये statement सही है? Is this statement correct? Give me the answer, everyone. नहीं पता, मैं बता दूं. ये बिल्कुल, अगर आपसे पूछा जाए ये स्टेटमेंट, सर ये दोनों स्टेटमेंट सही है. फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26, 2024-25, both the cases, for both the cases it is correct. ठीक है. अगला पॉइंट, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, नॉर्मल मॉनसून एंड ईजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट इंडियाज ग्रोथ. दैट इज ट्रू. ये बिल्कुल सही है. इंडिया की ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए यही तो फेवरेबल टर्म्स है. S&P प्रोजेक्टेड इंडिया टू बी द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी. नहीं सर, इंडिया इज द fastest growing major economy, not second. Full year growth is supported by income tax concessions and expected RBI monetary policy easing. Full year growth is supported by income tax concession and RBI monetary policy easing. That is true. So answer is going to be 1, 2, 3 and 5 are the correct answers. तो उसके बेसिस पे अगर हम आंसर बनाए, A option is the correct answer. A option is the correct answer. बोलो, समझ आ गई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? शैल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज? ओके, अगली न्यूज बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज रिलेटेड टू PFRDA. आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑफ योर्स, बट आई विल बी गिविंग यू अ न्यू बेंचमार्क व्हिच यू नीड टू कवर बिफोर यू गो फॉर द एग्जामिनेशन. अपने एग्जामिनेशन में जाने से पहले 3 चीजें जरूर पढ़ के जाना. नेशनल पेंशन स्कीम, फर्स्ट इज नेशनल पेंशन स्कीम. दूसरी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वी कॉल इट एज UPS, वी कॉल इट एज UPS. और जो थर्ड पॉइंट मैं चाहता हूं कि आप अपने एग्जामिनेशन में जाने से पहले जरूर पढ़िएगा, दैट इज MSF, विच इज नोन एज मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क अंडर NPS अगेन. मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क अंडर NPS अगेन. तो मैं इसका एक ओवरऑल आपको ओवरव्यू दे देता हूं. उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर होगी. निटी-ग्रिटीज वैसे मैंने समझा दी है इस PPT में, आप एक बार पढ़िएगा. ना समझ आए तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं. वी ऑल नो दैट व्हाट इज नेशनल पेंशन स्कीम. सो नेशनल पेंशन स्कीम बेसिकली वाज लॉन्च्ड आफ्टर गवर्नमेंट announced that government will no more provide once the government has announced that government will no more provide the pension to the government employees, and once government has came up with this particular announcement, then government
came up with a new scheme. We call it as National Pension Scheme. Government came up with new scheme and we call this new scheme as National Pension Scheme. The question is, what is National Pension Scheme? So National Pension Scheme basically means government employees, for them it is mandatory, but individuals like you and me who are private I would say employees, or who are running their own businesses, they can also join this particular scheme. This scheme allows you to save your funds on regular basis. So it allows you to come up and contribute certain percentage of your salary on regular basis. If you are a government employee, the central government employee, the same percentage will be contributed by government as well into your account, and this amount which is credited into this account, this amount will be invested. I repeat, this will be invested in the stock market. Invested in the stock market, or I would say it will be invested in the stock asset, which include, it will be invested in G class asset, that is government securities, E class asset, which is equity shares, and C class asset, which we call it as debentures, corporate bonds. So these investments will be done, and this investment will lead to huge returns to the investors. अब इससे होगा क्या? एक तो आपने अपना पैसा सेव किया, गवर्नमेंट ने भी आपके बिहाफ पर कुछ पैसा सेव किया, and at the time of retirement you will be able to withdraw these funds in the form of lump sum, or even you can ask the concerned authorities to make the repayment in installments. उसके साथ साथ जो सबसे important point है कि in comparison to the other saving contribution scheme benefits where the return is prefixed or pre-decided, in this case the return is not prefixed, not pre-decided. It will depend on the market scenarios, but obviously investment will be done either in government security or in the equity instruments, or maybe in the corporate bonds, depending upon your requirement, depending upon your needs. ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जब आप 60 years से ज़्यादा के हो जाएंगे, once you attain the age of 60 years, you can withdraw certain percentage and rest of the amount will be received on regular basis. We call that term as annuity. Someone has mentioned it in the chat box, तो मैं भी बोल देता हूँ, that regular payments which are paid, that is known as annuity. You can remember that. ठीक है जी, अब इसको समझते हैं क्या है। PFRDA introduced multiple scheme framework for non-government sector subscribers under National Pension Scheme. It is effective from 1st of October 2025. NPS subscribers in the non-government sector, which includes self-employed, private sector employees, digital workers and all. Deadline is 30th September. Last date for central government employees and retirees to switch from NPS to Unified पेमेंट स्कीम। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहला जो मैं डिस्कस करूंगा दैट इज रिलेटेड टू एमएसएफ, सेकंड आई विल बी डिस्कसिंग रिलेटेड टू यूपीएस। तो पहले एमएसएफ के बारे में क्विकली बात कर लेते हैं। सर एमएसएफ क्या है? इट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मल्टीपल स्कीम। सब्सक्राइबर्स दे कैन होल्ड मल्टीपल स्कीम्स अंडर सिंगल permanent retirement account number. Scheme can be managed across different central record keeping agencies. Earlier there was only one scheme per tier and it was linked to only one central record keeping agencies. आपको याद होगा कि जो आपका ये account है, it is maintained in two tiers, tier 1 and tier 2. In case of government employees, tier 1 cannot be withdrawn before retirement, but in case of government employees, tier 2 can be withdrawn as per the requirements. But in case of private investors या self-employed, tier 1 का जो holding period है that is 15 years. After 15 years you can withdraw that, but tier 2 can be withdrawn whenever required. तो ये जो term tier है, it is basically the part of your accounts in which the contribution is done. So only one scheme per tier was allowed earlier and it was linked to only one central record keeping agency, but now the things have been changed. Subscribers, they can hold multiple schemes under a single permanent retirement account number, and that can be, and these schemes can be managed across different CRAs rather than linking to one. अब scheme design कैसा होगा? So pension fund, please pay attention. Pension fund ने allow किया है, allowed to design schemes for specific subscriber groups, जैसे कि schemes बनाओ specially for digital economy workers, for self-employed personals, for corporate employees. दूसरा point है variant under MSF mandatory,
मॉडरेट रिस्क वेरिएंट हो गया। दूसरा हाई रिस्क वेरिएंट, दैट इज इक्विटी एलोकेशन अप टू 100% कंपेयर टू 75% अर्लियर। तो आपके पास जो वेरिएंट्स है अंडर दी एमएसएफ मैंडेटरी वेरिएंट्स में, एक है आपके पास मॉडरेट रिस्क वेरिएंट जिसमें यू कैन इन्वेस्ट up to 75% in equity, but in case of high risk you are even allowed now to invest 100% of your contribution into the equity। और वहां पर एक ऑप्शनल भी है, वो क्या, लो रिस्क वेरिएंट, जो कि डिस्क्रिशन पे मिलता है। ऑन द डिस्क्रिशन यू गेट दिस वेरिएंट जहां पे यू कैन गो इवन बिलो द रिक्वायरमेंट ऑफ, दैट इज इवन बिलो द मार्क ऑफ 75%। तो यहाँ पे मीडियम रिस्क वो स्कीम है जिसमें यू कैन इन्वेस्ट अप टू 75% इन इक्विटी। हाई रिस्क वो स्कीम है जिसमें यू कैन इन्वेस्ट अप टू 100% इन द इक्विटी, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर वॉलेटाइल इन नेचर, ये हम सब जानते हैं। स्विचिंग स्कीम्स, बिफोर 15 years वेस्टिंग पीरियड सब्सक्राइबर कैन स्विच ओनली टू द कॉमन स्कीम। तो इसका मतलब आज अगर आपने एमएसएफ में अप्लाई किया, उस एमएसएफ को इंप्लीमेंट किया, देन यू कैन स्विच बैक टू द कॉमन स्कीम, दैट इज द ओल्ड पेंशन फंड स्कीम बिफोर वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड मतलब होल्डिंग पीरियड जिसमें आप विड्रॉल नहीं कर सकते, लेकिन आफ्टर 15 years of vesting period free movement is allowed across all these schemes under MSF, which stands for what? Sir, it stands for multiple scheme framework. Next point says tier 1 vesting period is compulsory, if you remember 15 साल। tier 2 का vesting period optional है, जैसा कि मैंने अभी बताया। inclusion क्या, sir, it will be applied on all the new and existing NPS सब्सक्राइबर्स। टीयर 1 अकाउंट रिटायरमेंट फोकस्ड मैंडेटरी, जहां पर आपके पास वेस्टिंग पीरियड है 15 years का। टीयर 2 अकाउंट पहली बात तो ये वॉलंटरी है, आप खुलवाओ या नहीं आपके ऊपर है, और इसमें विड्रॉल एनी टाइम अलाउड है। स्कीम क्लोजर प्रोविजन, इफ अ स्कीम वाइंड्स अप सब्सक्राइबर कैन मिटिगेट टू एनी कॉमन स्कीम और अ स्कीम अंडर सेक्शन 20 ऑफ PFRDA एक्ट। अगर आपने किसी स्कीम को ऑप्ट किया और वो स्कीम वाइंड अप हो गई, खत्म हो गई, तो उस केस में यू कैन मिटिगेट बैक टू द कॉमन स्कीम और यू कैन ऑप्ट एनी अदर स्कीम व्हिच इज अवेलेबल अंडर द गिवन एक्ट। इफ नो चॉइस इज गिवन, अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है और आपकी करंट स्कीम बंद हो चुकी है, तो सब्सक्राइबर विल बी ऑटो शिफ्टेड टू टीयर 1 ऑटो चॉइस, दैट इज लाइफ साइकिल 50 स्कीम मैनेज बाय सेम पेंशन फंड। अब ये क्या है सर, एनी आइडिया? टीयर 1 ऑटो चॉइस लाइफ साइकिल 50 स्कीम, एनी आइडिया? लाइफ साइकिल 50 स्कीम, एनी आइडिया? बताओ जरा, किसी को इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो बताओ, अदरवाइज ऑब्वियसली मैं तो बताऊंगा ही, मेरा तो फर्ज बनता है ये चीज को बहुत डिटेल में बताना कि यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। बट इफ यू कैन टेल मी इट वुड बी प्रीटी नाइस। नो, चलो मैं बताता हूँ। ये जो टर्म है ना, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट। किसी ने अभी सही लिखा था बीच में 50 पर एमी हैज रिटन द करेक्ट पॉइंट, राइट डायरेक्शन है कि सर ये जो 50% लिखा है दैट इज रिलेटेड टू बेसिकली व्हाट सर, दैट इज बेसिकली related to your capacity to contribute in the equity instruments. So as per the auto shifted to tier 1 auto choice LC50 scheme, it means when someone opens an NPS account tier 1, they must choose their pension contribution will be invested. There are two broad choices. One is active choice. Active choice means subscriber choose asset allocation on their own कि इक्विटी में कितना जाएगा, कॉर्पोरेट में कितना, गवर्नमेंट बॉन्ड में कितना। दूसरा है auto choice, which means life cycle funds. Asset allocation is automatically adjusted based on the subscriber's age. It is automatically adjusted based on the subscriber's age. It means if a subscriber does not specify any choice while joining the NPS, the system by default assign them to tier 1 auto choice life cycle LC50 scheme. और ये जो LC50 scheme, it means the equity allocation starts at 50%. So जो आपकी इक्विटी एलोकेशन है दैट विल बी 50% अप टू द एज ऑफ 35 एंड ग्रेजुअली इट विल रिड्यूस विद शिफ्ट इन एज। अगर आपकी एज अप टू 35 है, 50% आप इक्विटी में कर सकते हैं, 30% कॉर्पोरेट डेट एंड 20% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। व्हेन यू मूव बियॉन्ड 35, दैट इज 36 ऑनवर्ड्स, इक्विटी शेयर रिड्यूसेस। इक्विटी शेयर हर साल 2% कम होता जाएगा और डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हर साल इंक्रीज होते जाएंगे। बाय द एज ऑफ 55
equity reduces to 10% while government securities will dominate. That is basically known as LC50. ठीक है जी, तो ये ऑटो चॉइस है. अगर आपने एक्टिव चॉइस ली जिसमें आपने खुद बताया कि आपको क्या चाहिए, तो आपकी बात मानी जाएगी, लेकिन उसमें कंडीशन है कि अगर आप मॉडरेट रिस्क में जा रहे हैं तो 75% का बार है ऑन इक्विटी, और अगर आप हाई रिस्क जो कि अब अलाउड है उसमें आप 100% तक इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच वॉज नॉट अलाउड अर्लियर. समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक है. अब मैं बात करूंगा दूसरी टर्म की. जो दूसरी टर्म है दैट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम लिंकेज. 1 अप्रैल 2025 सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं या जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, वी आर गिविंग देम एन ऑप्शन अंडर एनपीएस and the deadline is 30th September 2025 to switch. Default rule is if no choice is made, then automatically you will be considered that you have shifted to UPS, that is unified pension scheme. है क्या, इसको समझते हैं. इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे ऑब्जेक्टिव है एश्योर्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड एंड एडिक्वेट रिटायरमेंट बेनिफिट्स. तो आपको एक एश्योर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट हैज कम अप विद यूपीएस. It addresses the concerns of longevity, protection and predictability of pension income. तो इसके एक पहला तो ये कि सर ये जो आपकी पेंशन इनकम है अब आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली अगर आप इन्वेस्टमेंट खेल रहे हैं तो उसमें उसे प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, टफ होगा. तो उसी सिनेरियो में इस यूपीएस के बारे में बात की गई है, लेकिन इस यूपीएस के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, गिव मी सम टाइम. उसके बाद ये कुछ इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन यू फॉर पीएफआरडीए. रिमेंबर द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए एस रमन एंड रिमेंबर द हेडक्वार्टर, इट इज इन न्यू दिल्ली. तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा था कि 30 सितंबर 2025 इज द लास्ट डेट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू स्विच फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस. अगर आपने चूज नहीं किया देन यू विल बी ऑटोमेटिकली linked to UPS or you will be automatically converted to UPS. So those who do not exercise this option within the deadline, by default they will continue under UPS. UPS को introduce किया गया था जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 1 April 2025. Applicability, sir, it is applicable on central government employees only, जैसे कि MSF is applicable only on non-government employees, but UPS is applicable only and only on central government employees and past retirees as an ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अंडर एनपीएस. की फीचर्स क्या है? पहला, डिफाइंड बेनिफिट टाइप अनलाइक एनपीएस. इसका मतलब क्या सर? यहां पे यूपीएस में आपकी जो बेनिफिट है दैट इज गोइंग टू बी प्री डिफाइंड. यहां पे आपको गारंटी मिलेगी एश्योर्ड पेंशन विद इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन. इंडेक्सेशन का मतलब क्या? व्हेनेवर वी यूज दिस वर्ड इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि यू विल गेट द रिटर्न equivalent to counter the inflation aspect in the economy. आपको उतना रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट में मिलेगा that you will be in a position to counter the inflation on your investment. इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंडेक्सेशन इज बेसिकली अ मेथड which is used to adjust the purchase price of an asset for inflation using the government notified inflation index. So in this particular case, let's say if I say इन्फ्लेशन 6% है तो उस पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो बेयर मिनिमम 6% का होगा, सो दैट योर इन्वेस्टमेंट इज गिविंग यू रिटर्न मोर देन द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन योर कैश. ठीक है जी, क्लियर हुआ ये पॉइंट. अगला पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है? प्रिडिक्टेबिलिटी. इट विल प्रोवाइड स्टेबल पोस्ट रिटायरमेंट इनकम, रिमूविंग मार्केट वॉलेटिलिटी रिस्क विच इज प्रिवेलिंग इन एनपीएस. लॉन्गेविटी प्रोटेक्शन, दैट मीन्स पेंशन कंटिन्यूज फॉर लाइफ, addressing fear of fund exhaustion, कि भैया ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कहीं जाने वाला. तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या कि सर ये जो यूपीएस है, यूपीएस में बहुत क्लियरली कहा गया कि सर यहाँ पर हम आपके लिए गवर्नमेंट विल बी मैनेजिंग योर इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट विल बी मैनेजिंग योर इन्वेस्टमेंट इन सच अ मैनर दैट गवर्नमेंट विल गिव यू एश्योर्ड रिटर्न. गवर्नमेंट पहले से आपको बता देगी कि आपको जो रिटर्न है वो 10% मिलेगा और वो रिटर्न आपके इन्फ्लेशन इंपैक्ट से ज्यादा होगा, एंड फॉर श्योर यू विल बी गेटिंग दिस रिटर्न एज पर द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट. 10% इज जस्ट एन एग्जांपल विच इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ एनपीएस और विच विल नॉट बी इवन अवेलेबल इन केस ऑफ एमएसएफ. तो बहुत सारे एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, दे वर फीलिंग दिस इशू कि यार बहुत टफ हो जाएगा
अंडर एनपीएस जैसा मार्केट वॉलेटाइल चल रही है, अगर इसी हिसाब से मार्केट वॉलेटाइल चलती रही तो इट विल बी वेरी टफ फॉर एक्सपेक्टिंग appropriate return on the time of at the time of investment, at the time of retirement. The government का no worries, we are giving you UPS as well, that is Unified Pension Scheme, where we will give you the benefits, and these benefits are going to be assured and predictable benefits. समझ आ गई बात? तो ये तीनों मैंने आपको लिख के दे दिए, NPS, MSF as well as UPS. एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. I will be taking up your doubts in the next session. Done guys? Clear है? Any doubt till this point you may ask please. Yes, obviously, but it's obvious ना यार, ये तो वो बात हो गई. दिव्या, what is finance? When we talk about finance, one of the basic rule of finance is risk is directly proportional to return. तो जब रिस्क बढ़ेगा तब रिटर्न बढ़ेगा, या जब आप रिटर्न बढ़ाने की कोशिश करोगे रिस्क साइमल्टेनियसली बढ़ जाएगा. दैट इज अ पॉइंट. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. आई थिंक आई मिस्ड द एमसीक्यूज ऑन दिस न्यूज, बट इट्स ओके. अगली न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है. इट विल अगेन टेक फ्यू मिनट्स. दिस इज इंटरऑपरेटेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स. इंटरऑपरेटेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, इसका मतलब क्या? क्वेश्चन मिस हो गया, सॉरी धनंजय, एज आई सेड. ध्यान से सुनना. अगर मुझसे कोई कहे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, याद है आपको? आई होप यू ऑल रिमेंबर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स. सो व्हाट इज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स? सो व्हेनेवर अ फिनटेक or an entity is innovating a particular product, a service, or maybe an application, and they want it should be implemented and it should be provided to the public for their benefit, for their growth, for their development, RBI do not allow them to directly offer those products, those applications to the public. So what RBI comes up with, RBI say that I have a regulatory sandbox, which means it's a playground where we will be live testing your product, your service, or maybe your application. And once you pass the test, then we will allow you to implement, showcase, or offer your services to the public once you exit successfully. अब हुआ क्या? प्रॉब्लम क्या आनी शुरू हुई? सो प्रॉब्लम ये आनी शुरू हुई कि आरबीआई तो रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर का. अब मैंने क्या किया, मैंने एक ऐप बनाई और मैंने उस ऐप में कहा कि सर आई एम रेडी टू गिव यू लोन विदाउट सिक्योरिटी. इट्स अ ऐप वेयर आई एम प्रोवाइडिंग यू कोलैटरल फ्री लोन, बट it will be possible only if you will be purchasing the life insurance policy of same value. समझ आ रही है बात? What I'm trying to say, if you are seeking a loan of 10 lakh rupees, I'm ready to give you a loan of 10 lakh. I have no problem with that, but I will offer you this 10 lakh rupees of loan only and only if you buy an insurance policy or life insurance policy of 10 lakh rupees, and you have to pay the premium of next 5 years of this particular policy in advance. तो अगर मैंने एक ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च की तो इसका अप्रूवल मुझे किससे चाहिए? आरबीआई से. लेकिन उसके साथ साथ आई नीड द अप्रूवल, आई नीड द गो हेड फ्रॉम IRDAI एज वेल. तो जब एक ही प्रोडक्ट के लिए, एक ही एप्लीकेशन के लिए, एक तरह की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, व्हेन देयर आर मल्टीपल रेगुलेटर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, then obviously these multiple regulators, they will be running the product at their regulatory sandbox. But rather than running the products at their regulatory sandbox independently and then coming up with the result that whether approval is need to be given or not, it is good that we should come up with an interoperable regulatory sandbox. It is nothing कि RBI ने recently launch किया, बिल्कुल नहीं सर. This has been launched by RBI in 2022. तो ये न्यूज में नहीं था, एग्जाम में आने के चांसेस भी नहीं थे, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आरबीआई ने रिसेंटली अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को अपडेट किया है विद रिस्पेक्ट टू दीज इंटरऑपरेटेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो ये अपडेट फ्लैश हुई आरबीआई की वेबसाइट पे, ये न्यूज आज की डेट में 2025 में इंक्लूड हो गई, जिसकी वजह से न्यूज मैं आपके सामने लाया। ठीक है जी, रीजन समझ आ गया व्हाई दिस न्यूज इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, क्या करना है इसमें वो मैं आपको अभी पढ़ा देता हूं। सो व्हाट इज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स? मुझे लगता है जो those who are joining my classes on regular basis, they are very well aware what is regulatory sandbox. So it is like a safe testing zone where innovators, they can experiment new financial products, services or technologies. It allows live testing with real users, but in a controlled environment under regulatory supervision. Regulators may grant temporary relaxation for certain rules so that innovators can try out new ideas, but at the time of implementation, all the rules are need to be implemented. For example, a startup is testing new cross-border payment app might get primary flexibility in KYC rule just for test period, but not applicable at the time of implication period. ठीक है? Which regulators in India are running their own sandboxes? RBI is running the sandbox for banking sector, payment, that is Payment and Settlement System Act, Financial Inclusion Innovations, SEBI for Security Market and Investment, IRDAI for Insurance Products and InsurTech. Then we have IFSCA for Innovation in IFSC, that is International Financial Service Center. PFRDA does not have its own sandbox but participate in IORS as an associate regulator. तो PFRDA के पास अपना सेपरेट नहीं है, बट इट कैन एक्ट एज अ सेपरेट एंटिटी इन केस ऑफ IORS. अब क्या है ये IORS? क्या जरूरत पड़ी इस IORS की? सर समटाइम्स एन इनोवेशन फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ मोर देन वन रेगुलेटर, जैसे मैंने अभी बताया इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, पेमेंट. टू सॉल्व दिस इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रुप ऑन फिनटेक अंडर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल डिजाइंड अ कॉमन फ्रेमवर्क. तो अगर हमसे कोई पूछे कि ये जो प्रॉब्लम आई कि सर एक ही प्रोडक्ट में ऐसे स्टेप्स इन्वॉल्व है जिसमें डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो इंटर रेगुलेटरी टेक ग्रुप ऑन फिनटेक which is operating under Financial Stability Development Council has come up with a solution. उन्होंने solution क्या दिया? उन्होंने कहा we should come up with IORS. So they have created standard operating procedure for IORS involving RBI, SEBI, IRDI, PFRDA, IFSCA plus representatives from Ministry of Finance and Ministry of Electronics and Information Technology. तो ये जो IRTG FinTech included not only the financial sector regulators, but they also included the representation from Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Electronic and Information Technology. So this ensured holistic perspective combining regulatory expertise with policy level oversight. ठीक है जी. अब क्या है आखिरकार ये इंटरऑपरेटेबल सैंडबॉक्स? तो सर अगर हमसे कोई पूछे कि इंटरऑपरेटेबल सैंडबॉक्स क्या है, then my answer to this particular question would be interoperable regulatory sandbox is a unified platform which enables innovators to test financial products or services involving multiple regulators. Unlike traditional sandboxes where an applicant must separately approach to each regulator, यहाँ पे ऐसा नहीं है. IORS allows innovators to engage through a single window system. इस मॉडल में क्या होगा? So it is basically suited for the hybrid financial products such as saving products that combine banking and insurance features, digital wealth management tools, integrating mutual funds, pension solution and cross-border payment application linked to domestic banking and security settlement. So इसीलिए IORS जो है, it not only simplify the process but also fosters cross-sectional innovation by bridging regulatory issues. इसमें कौन involved है? As I already told, these are the organizations which are involved or which are the participants of IORS. The participants कौन हुए? Regulators plus companies like fintech companies, financial institutions, regtech and subtech providers. That means the one offering the compliance and supervisory
technologies as well as startup and innovators. Eligibility criteria will depend on the principal regulator as well as associate regulator. अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा ध्यान दें. लेट्स सपोज आई हैव अ प्रोडक्ट और मैं अपने उस प्रोडक्ट को लेकर गया कि सर मुझे इसे टेस्ट कराना है IORS पे. इस प्रोडक्ट में लोन फैसिलिटी भी है द वे आई सेड अर्लियर और इंश्योरेंस भी है. अब इस केस में RBI भी रेगुलेटर है और IRDAI भी है. नाउ वी विल चूज विच इज अ प्रिंसिपल रेगुलेटर. जिस भी रेगुलेटर की ज्यादा नॉर्म्स फुलफिल होंगी या ज्यादा नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ रहा होगा, that will be a principal regulator and the other one will become the associate regulator. Don't worry, I'll explain you. So IORS is basically designed to test products that fall in multiple regulator parameters like digital payment, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट. ये प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन है, बेनिफिट्स मैं बता चुका हूं. अब आते हैं मेन मुद्दे पे. PR is determined by the product's dominant features. जिस भी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के या रेगुलेटरी बॉडी के ज्यादा फीचर्स होंगे, ज्यादा रूल्स इंप्लीमेंट होंगे, दैट विल बी अ प्रिंसिपल रेगुलेटर. अगर लोन्स है तो RBI प्रिंसिपल रेगुलेटर बन जाएगा, इंश्योरेंस है तो IRDAI बन जाएगा. एसोसिएट रेगुलेटर ओवरसी द अदर फीचर्स which are beyond the principal regulators scope. अब मैंने कहा कि सर मैं लेके आ रहा हूं एक नई एप्लीकेशन जिसमें I will be providing you loan that will come under the digital lending which is under RBI, and if you want to borrow collateral free loan from me you have to purchase an insurance policy from me. So this is digital lending. So my basic operation is digital lending. Simultaneously, in order to ensure myself, in order to decrease my risk, I am selling or providing this insurance service. So obviously आपको सुनने में समझ आ रहा होगा डोमिनेटिंग फीचर किसके होंगे, लोन के होंगे. अगर लोन्स के डोमिनेटिंग फीचर है तो प्रिंसिपल कौन बनेगा, प्रिंसिपल रेगुलेटर विल बी RBI एंड एसोसिएट रेगुलेटर विल बी IRDAI. दैट इज अ पॉइंट. सो द टाइप ऑफ प्रोडक्ट enhancement, loan, deposit, insurance, pension, the number of regulatory relaxations requested with greater weight given to this factor. तो इसका मतलब क्या, डिटर्मिन कैसे करोगे कि डोमिनेटिंग कौन है. सर जिसके ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की बात आएगी वही आपका डोमिनेंट रेगुलेट बन जाएगा. Eligibility criteria is the applicant must meet the eligibility and net worth requirements of the concerned principal regulator sandbox. For example, if RBI is the principal regulator, then you can apply to the RBI's regulator. Then you can apply to RBI sandbox rules will apply before you will be seeking the application. अब पूरा process क्या है? So the process is first one, a single application must be submitted via an email and it will be submitted to the fintech department of RBI, irrespective who is going to be the principal regulator. Initially आपकी जो पहली आप कहोगे कि एप्लीकेशन है that will go to RBI. The form is available on the RBI website. No application fees is charged. If the principal regulator sandbox prescribes certain fees तो चार्ज होगी, लेकिन RBI की तरफ से कोई फीस नहीं है. टाइमलाइन इज ऑन टैप बेसिस एक्सेप्टेड. आप जब चाहे मन करे आप एक्सेप्ट, आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो. फिर क्या होगा सर, इनिशियल स्क्रीनिंग विल बी डन बाय द RBI फिनटेक डिपार्टमेंट. डिटेल्ड इवैल्यूएशन इज कैरिड आउट बाय दी. जैसे ये RBI फिनटेक डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग करेगा, इट विल आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल रेगुलेटर. तो प्रिंसिपल रेगुलेटर को this application will be forwarded. So detailed evaluation will be carried out by the principal regulator as per its sandbox framework. The principal regulator coordinates with associate regulator for assessing aspects falling under their purview. ठीक है जी. तो पहले RBI देगा प्रिंसिपल रेगुलेटर जाएगा एसोसिएट रेगुलेटर के पास, फिर मिलकर डिसाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर एक फॉरेन फिनटेक है वो अप्लाई कर सकता है इन सच केसेस, और अगर आप फॉरेन फिनटेक है और आप अप्लाई करना चाहते हैं इन दैट पर्टिकुलर केस IFSCA विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल रेगुलेटर. अब टेस्टिंग कैसे होगी सर? टेस्टिंग प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड अंडर द प्रिंसिपल रेगुलेटर सैंडबॉक्स रूल इन कोऑर्डिनेशन विद एसोसिएट रेगुलेटर. एसोसिएट रेगुलेटर के साथ कोऑर्डिनेशन में कौन है आपका, कोऑर्डिनेशन कौन देगा? एसोसिएट रेगुलेटर देगा. किसे? प्रिंसिपल रेगुलेटर को. ड्यूरेशन generally 6 to 9 months is the duration, same is the duration for RBI regulatory sandbox.
same is the regulation of RBI sandbox. और अगर आप एक fintech player है, you are still allowed, but in that particular case, your principal regulator will be IFSC. अब post testing क्या होगा? अगर it is a successful trial, then firms they must seek formal authorization from the respective regulator before commercial launch. तो जैसे ही आप successfully exit करेंगे, you will get a formal approval and authorization that yes, your product is success, you can implement it. Regulator decision will be final and successful exit from IORS is published through a press release by concerned regulator facilitating wider adoption of innovation. ठीक है जी, समझ आ गई बात? तो समरी क्या है? IORS is India's single window regulatory sandbox that make it easier to test and launch cross sectoral financial innovations, and it brings all the regulators on one stage to test a product which falls under the preview of different regulators simultaneously. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. गिव मी अ सेकंड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, बट नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. द क्वेश्चन इज नाउ ऑन योर स्क्रीन. सर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंटर ऑपरेशनल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स. तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? सर, पहली स्टेटमेंट कहती है द IORS framework that allows innovators to test hybrid financial product or services involving more than one regulator. True, बिल्कुल सही है. Pension Fund Regulatory and Development Authority country act as associate regulator under IORS. That is true. Applications for IORS can only be submitted during the specific annual window. नहीं sir, on tap allowed है. Principal regulator is determined based on the dominant features of the product. That is true. Fintech department of RBI conduct the preliminary scrutiny of the application. That is true. तो उसके हिसाब से अगर हम चले 1, 2, 4, 5 are correct. So E option is the correct answer. E option is the correct answer. ठीक है जी, क्लियर हो गया? Is this point clear? आगे बढ़े अगली न्यूज की ओर. अगली न्यूज भी इंपॉर्टेंट है और अगली न्यूज से भी क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं. अगली न्यूज की ओर भागते हैं जल्दी से. अगली न्यूज क्या कहती है? 32nd मीटिंग ऑफ FSDC सब कमेटी वॉज कंडक्टेड रिसेंटली. तो रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी, शायद आपने सुना हो ये नाम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. सो व्हाट इज दिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल? सो दिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल is basically responsible for financial stability of the economy as well as to enhance inter-regulatory coordination. Inter-regulatory coordination means coordination between RBI, SEBI, PFRDA, IRDA and whatnot. So recently their meeting was held. Let's talk about the important, I would say, topics which were discussed in this particular meeting so that if any question is asked, you are in a position to answer it. Financial Stability and Development Council is a high-level institutional body in India, which is obviously created to strengthen financial stability, enhance inter-regulatory coordination and promote financial sector development. Its subcommittee, which is headed by Governor of RBI, plays a critical role by addressing operational and technical issues that cut across different financial regulators and government agencies. The 32nd meeting of FSDC subcommittee was obviously conducted under the chairman. The name is Sanjay Malhotra ji, the governor of RBI. The meeting, अच्छा याद रखना, संजय मल्होत्रा जी इसके चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर है, which means आरबीआई गवर्नर कोई भी होगा, he or she will be the chairman of this particular committee. So the meeting brought together key financial sector regulators and senior government officials to review the economic and financial stability development. क्या क्या discussions हुआ? पहले discussion जो हुआ सबसे पहला global and domestic macroeconomic review. The subcommittee discussed major global
and domestic macroeconomic and financial sector developments, जिसमें the emphasis was placed on identifying potential financial stability risk which can arise due to ट्रेड अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शंस एंड स्पिल ओवर इफेक्ट। तो पहला सर जो टॉपिक डिस्कस हुआ वो ये कि ग्लोबल हालत अच्छी नहीं है, ये बताओ कि उसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या हो सकता है। दूसरा, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन। सो एफएसडीसी एससी रिव्यूड प्रोग्रेस इन ऑनगोइंग कोलैबोरेटिव एफर्ट्स among the regulators and ministers, including simplification of KYC process to make financial services more accessible and reduce compliance burdens, special financial inclusion rules, special financial inclusion drives which are aimed at extending formal financial services to underserved and unserved section of the society, that was also discussed in this particular meet. So अगला जो point discuss हुआ इस meet में वो ये था कि सर ये जो collaboration efforts hai among the different regulators and ministries, how it is doing and how well they are succeeding, or they have succeeded to achieve the targets related to the financial inclusion as well as easing out the process of financial transactions. Agla point काफी important है which they discussed, that is National Strategy for Financial Inclusion 2025-2030. The subcommittee deliberated on the formulation and rollout of the next phase of National Strategy for Financial Inclusion covering the period 2025-2030. NFSI provided a roadmap to first expand access to financial services, improve financial literacy, deepen usage of digital payment, credit insurance, pension, and strengthen the overall financial ecosystem. तो अगर आपसे कोई पूछे what are the targets of NSFI 2025-2030, so answer is expand access to financial services, improve financial literacy, deepen usage of digital payments, credit insurance, and pension, as well as strengthen the overall financial ecosystem. Third, last point which was discussed, that was review of institutional mechanism, where state level coordination committee which function as a state level watchdog against the unauthorized financial activities, they were reviewed. The subcommittee assessed their effectiveness in protecting consumers, monitoring fraud, and enhancing the coordination between the state government as well as the financial regulators. ठीक है जी, समझ आ गई बात। अब अगर मैं कमिटमेंट और आउटलुक की बात करूं, द सब कमेटी रीअफर्म्ड इट्स स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू एनहांस financial sector resilience through inter-regulatory coordination, maintaining vigilance on emerging risk. Subcommittee has also reaffirmed its strong commitment to support initiatives to strengthen financial inclusion as well as financial stability in the country. Just आपके reference के लिए लेके आया हूं मैं, just for your reference, कौन कौन present था इस meeting में? RBI के members, governor as well as deputy governors, then we have chairman of SEBI, chairman of IRDAI, chairman of PFRDA, chairman of Insolvency and Bankruptcy Board of India. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? तो ये पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द कंट्री, एफएसडीसी सेक्रेटरीट भी प्रेजेंट है। जस्ट रीड दीज नेम्स, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, आई एम जस्ट गिविंग यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब कमेटी मीट। तो उसमें क्या क्या एरियाज पे डिस्कशन हुआ वो भी आप पढ़ लेना। इट इज अ प्योर थ्योरेटिकल न्यूज, आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस, यू हैव टू रीड इट, you have to read it and try to memorize the discussions which have happened in this particular meeting. इसके कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी आपको पहले भी समझा चुका हूं। ठीक है जी, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एजेंडाज ऑफ 32nd FSDC SC मीटिंग, फर्स्ट वन, the subcommittee deliberated upon National Strategy for Financial Inclusion 2025-2030, that is true. It reviewed the functioning of state level coordination committee, that is true. The next point says it focused on it focused on domestic issues without considering the global development. Wrong. Global development पे बात हुई. The meeting discussed the simplification of KYC process and special drivers for financial inclusion, that is true. The subcommittee
reaffirmed its commitment to strengthen financial sector resilience through inter-regulatory coordination. That is true. So answer is going to be B option. 1, 2, 4, 5 are correct, but the third statement is wrong. ठीक है जी, क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट तो पूछ लो. If you have any doubt, you may ask, please. एक न्यूज और है, बट व्हाट आई थिंक इज वी शुड डिस्कस दैट न्यूज इन द नेक्स्ट सेशन. आज के सेशन में वी वोंट बी डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर न्यूज. अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. मैं आपको एक आइडिया देता हूँ अगली न्यूज किस पे है. अगली न्यूज इज रिलेटेड टू स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स. तो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर से रिलेटेड आरबीआई ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की है विद रिस्पेक्ट टू नॉन डेरिवेबल रुपी डेरिवेटिव्स. तो उसके बेसिस पे मैंने एक न्यूज आपके लिए बनाई है. आई विल बी डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर न्यूज इन द नेक्स्ट सेशन. आज डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन इन मच डिटेल. इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कंटेंट. सो इट्स बेटर वी कैन होल्ड वन न्यूज एंड वी विल बी कवरिंग दैट इन द नेक्स्ट सेशन टू. ठीक है जी, क्लियर है? अब होमवर्क तो आजकल आप कर नहीं रहे हैं, तो आई हैव डिसाइडेड दैट आई शुड नॉट गिव यू दी होमवर्क बिकॉज मैं होमवर्क दे भी दूंगा उससे फायदा होगा नहीं. यू आर नॉट गोइंग टू कमेंट द करेक्ट आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. तो आई थिंक दैट इज अ यूजलेस एफर्ट. इसीलिए मैंने पिछली बार भी होमवर्क नहीं दिया था और आज भी सोच के तो यही आया हूँ कि होमवर्क ना दूँ, क्योंकि आप लोग अटेम्प्ट करोगे नहीं, शेयर करोगे नहीं, तो इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम. तो मैंने रिवीजन भी पार्ट इसीलिए हटा दिया और उसके साथ साथ होमवर्क का सेगमेंट भी मैंने इसीलिए हटा दिया बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट. सो दैट मीन्स यू डोंट नीड इट. ठीक है जी, ओके. अच्छा, फ्री एआई पे एक वीडियो बना लेते हैं, वो ठीक है. ये पॉइंट आपका सही है. आप अपनी डिमांड जरूर कर सकते हैं, चाहे आप मेरी रिक्वेस्ट पूरी करो या ना. मैं आपसे कुछ कहूँ वो आप पूरा करो या ना करो, लेकिन मैं आपकी रिक्वेस्ट, आपकी डिमांड जरूर पूरी करूंगा. तो फ्री एआई पे आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी. यू विल गेट अ वीडियो वेरी सून, मे बी बाय लेट इवनिंग टुडे ऑन फ्री एआई. तो देखिएगा उसे, बताइएगा मुझे इज इट क्लियर और नॉट. कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं हम नेक्स्ट क्लास में. ठीक है जी, तो कंक्लूड करें. ओके, सो दैट विल बी ऑल गाइज. इफ यू वांट होमवर्क क्वेश्चंस देन डू टाइप इन द कमेंट सेक्शन. अगर मेरे पास 10-12 कमेंट आ गए इस वीडियो के नीचे कि होमवर्क क्वेश्चन चाहिए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगा. ऑनेस्टली बताऊं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने होमवर्क क्वेश्चन बनाए नहीं है तो ये गलत है. ये रहे होमवर्क क्वेश्चंस. मैंने सारे होमवर्क क्वेश्चंस बनाए हैं. आप देख रहे होंगे कि जितने मैंने न्यूज़ कराई है उन सबके होमवर्क क्वेश्चंस मैं बना के लाया हूँ, बट आई एम नॉट गिविंग इट टू यू. ये मैंने अपने लिए बनाया. व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग दी मैराथन सेशंस एंड ऑल, उसमें मैं यूज कर लूंगा, है ना. मैं तो अब अपनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आई विल बी यूजिंग इट दैट वे. बट अगर आप लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो यू विल नॉट गेट. मैं आपको ये पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं करूंगा, डोंट वरी, यू विल नॉट गेट दिस पीडीएफ. इस पीडीएफ में यू वोंट फाइंड दी होमवर्क क्वेश्चंस. इफ यू वांट दी होमवर्क क्वेश्चंस once the class is complete, once we have completed the class, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जाना. अगर 10-12 कमेंट हो गए अगली क्लास तक, तो मैं इस क्लास का होमवर्क और अगली क्लास का होमवर्क एक साथ दे दूंगा. थैंक यू सो मच गाइज. कैच यू सून. बाय बाय. टेक केयर. गुड लक. गॉड ब्लेस यू.